अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो लेक्चर है दैट इज़ रिलेटेड टू unstructured data and how can we handle that unstructured data. Then we will discuss about the applications of this unstructured data into the data science context. So डाटा की वैसे तो मेजरली अगर बात करें तो इससे पहले हमने कोर्स में डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़ें कि 4 टाइप्स फाउंड होती हैं। स्ट्रक्चर्ड डाटा जिसमें एक डिफाइंड डाटा होता है, फॉर्मेट डाटा मॉडल होता है, फॉर्मेट ऑफ द डाटा होता है और उसका स्ट्रक्चर वेल डिफाइंड होता है, जैसे आपके पास डेटाबेस की एग्जांपल ली जा सकती है। देन उसके अलावा हमारे पास सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा वो कहलाता है कि जिसमें आपके पास जो टेक्सचुअल डाटा फाइल्स होती हैं उनके अंदर कोई अपेरेंट पैटर्न मौजूद होता है, ठीक है, जिस वजह से हम उसके ऊपर कोई एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक्सएमएल फाइल्स हैं, कलेक्शन ऑफ एक्सएमएल फाइल्स हैं या जेसन्स हैं, तो उस जो स्ट्रक्चर डाटा होता है, स्ट्रक्चर डाटा की बात करें तो उसकी ग्रोथ या उसमें जो वॉल्यूम है वो एज़ कम्पेयर टू बाकियों के वो सबसे कम होता है, बिकॉज वो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर होता है। उसकी ज़्यादा एग्जांपल्स आप टेबल्स डेटाबेसेस के फॉर्म में दे सकते हैं, या उसकी स्टोरेज के लिए आप ज़्यादातर एसक्यूएल को यूज़ करते हैं, एसक्यूएल डेटाबेसेस को, ठीक है। उसको अगर हैंडल करने के टूल्स की बात करें तो आप पांडास के ज़रिए या एसक्यूएल के ज़रिए आप उसको हैंडल कर सकते हैं। सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा चूँकि स्ट्रक्चर्ड डाटा थोड़ा डिफरेंट होता है कि उसमें आपके पास जो टेक्सचुअल डाटा फाइल्स होती हैं उसमें एक अपैरेंट पैटर्न होता है, बट यू कैन नॉट से फॉर श्योर। सो उस केस में आप यूजली जो उसकी स्टोरेज करते हैं वो नो एसक्यूएल डेटाबेस के ज़रिए करते हैं, जैसे मोंगोडीबी है या स्पार्क के ज़रिए उसके टूल्स वगैरह हैं। क्वासी स्ट्रक्चर डाटा वो कहलाता है कि जिसके अंदर आपके पास कोई इरेटिक फॉर्मेट्स होते हैं, मगर उनको फॉर्मेट किया जा सकता है यूजिंग सम एफर्ट एंड सॉफ्टवेयर टूल्स, जैसे आप क्लिक स्ट्रीम डाटा को दे सकते हैं। दैन उसके अलावा एक बिल्कुल ही अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, लास्ट क्लास में वैसे हमने थोड़ा सा बिग डाटा के ऊपर बात की थी, बट बिग डाटा की अगर बात करें तो ज़्यादातर हमारे पास जो अगर बिग डाटा को कहें तो वो आपके पास अनस्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है। तो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के अंदर आप एग्जांपल इसकी टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियोज, ऐसा डाटा को जो बहुत बिल्कुल ही कोई उसमें प्री डिफाइंड डाटा मॉडल ना हो, ना ही किसी प्री डिफाइंड मैनर के अंदर वो ऑर्गेनाइज्ड हो, वो आपके पास अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कहला सकता है, ठीक है। उसके स्टोरेज के लिए आपको ज़्यादातर क्लाउड को यूज़ करना पड़ता है। उसको प्रोसेस करने के लिए या उसके लिए जो लाइब्रेरीज़ हैं वो एनएलपी की लाइब्रेरीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्सचुअल डाटा भी उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा हम लोग देखेंगे आज को क्लास के अंदर, कि जिसमें हम टेक्स्ट डाटा की एग्जांपल देखेंगे, तो टेक्स्ट डाटा को कैसे प्रोसेस कर सकते हैं उसके लिए टूल्स हैं। देन इमेजेस हैं, उसमें ऑडियोज फाइल्स हैं, तो उनको कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। तो अगर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को डिफाइन करें तो ऐसा डाटा कि जिसका कोई भी प्री डिफाइंड डाटा मॉडल ना हो, ना ही वो किसी प्री डिफाइंड मैनर के अंदर ऑर्गेनाइज हो, तो आपके पास अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कहलाता है। यूजली आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशंस का डाटा होता है वो एक अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है, ठीक है। अगर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें स्ट्रक्चर्ड डाटा के साथ, तो स्ट्रक्चर्ड डाटा के अंदर टेबल्स, रोज, कॉलम्स वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के अंदर। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की अगर हम बात करें तो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के अंदर कुछ इस तरह से कहा जा सकता है कि अगर स्ट्रक्चर्ड डाटा कि जिसके अंदर आपके पास एक लाइब्रेरी, जिसके अंदर आपके पास लेट्स सपोज एक ऐसी लाइब्रेरी कि जिसके अंदर डेसिमल सिस्टम्स हों, तो वो आपके पास स्ट्रक्चर्ड डाटा कहलाएगा। और अनस्ट्रक्चर्ड उसको कह सकते हो कि जिसके अंदर आपके पास एक लेट्स सपोज बॉक्स ऑफ फोटोज हो, हैंड रिटन लेटर्स वगैरह हों या ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हों, तो आपके पास अनस्ट्रक्चर्ड लगेगा, बिकॉज वो किसी एक प्री डिफाइंड डाटा मॉडल को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है, और वो किसी एक प्री डिफाइंड मैनर के अंदर ऑर्गेनाइज नहीं है, ठीक। तो इसकी ज़्यादातर अगर आप डोमेन्स की बात करें तो ज़्यादातर आपके पास जो सोशल मीडियाज़ का डाटा होता है, हेल्थ केयर का डाटा होता है, मल्टीमीडिया का डाटा होता है, आईओटी का डॉक्यूमेंट्स की जो होते हैं वो यूजली आपके पास अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की बात कर रहे हैं तो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। ये हायर वॉल्यूम के अंदर होते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी होती है,
प्लस इसमें कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंसी होती है। देन उसके अलावा इसमें इसको प्री प्रोसेस करना, इसमें क्यूरी करना वो काफ़ी मुश्किल होता है। यूजली हमारे पास ये मल्टी मॉडल होता है। जो स्ट्रक्चर डाटा था वो हमारे पास यूजली सिंगल मॉडल को मतलब सिंगल एक या हम बात करें यूनी मॉडल होता है। तो जो यूजली आपके पास अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है वो मल्टी मॉडल होता है, बिकॉज इसमें कॉम्बिनेशन हो सकता है टेक्स्ट का, इमेजेस का, ऑडियो का, इन तीनों का मिला के भी आपके पास डाटा की टाइप बन सकती है। अगर चैलेंज की बात करें तो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा का सबसे बड़ा जो चैलेंज है दैट इज स्टोरेज एंड द स्केलेबिलिटी। क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जैसे लेट्स सपोज आपके पास टेक्स्ट हैं, लॉग्स वगैरह हैं, तो वो किसी भी आपके पास रिलेशन डेटाबेस के अंदर फिट नहीं होगा। उसके किसी भी रिलेशन डेटाबेस के जो टेबल्स होंगे उसमें कहीं भी फिट नहीं होगा। उसका साइज बहुत ज़्यादा हो सकता है, हेट्रोजीनियस फॉर्मेट के अंदर हो सकता है, और वो कंटिन्यूसली ग्रो कर सकता है। लेट्स सपोज आपके पास IoT डिवाइसेस का डाटा है या सोशल मीडिया का डाटा है, तो वो एक हेट्रोजीनियस फॉर्मेट के अंदर भी होगा और वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा होगा। तो इस सूरत में जो चैलेंज की बात करें तो सबसे जो पहला चैलेंज जो है दैट इज स्टोरेज एंड स्केलेबिलिटी। तो इसमें ये हो सकता है कि आपके पास जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजनली इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि आपके पास जो लॉग्स अगर लॉग्स फॉर्म के अंदर आ रहा है तो दैट इज यूजिंग पेटाबाइट्स ऑफ स्पेस। जिसमें लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ एक शेयर किया दैट इज कॉमन क्रॉस डाटा सेट। आई होप आप में से कुछ लोगों ने उसको देखा होगा। तो उसमें आप देख सकते हो कि वो जो लॉग्स हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पेटाबाइट्स, उनका वॉल्यूम है। देन चूंकि हमने बात की है इसके स्केलेबिलिटी की, तो उसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास हेट्रोजीनियस डाटा फॉर्मेट के अंदर आ रहा है। तो जो डाटा है वो आपके पास किसी भी एक फॉर्मेट के अंदर नहीं है, तो दैट मीन्स कि उसकी हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगी। और स्केलेबिलिटी की बात करें तो जो आपके पास रिलेशनल डेटाबेसेस हैं जैसे RDBMS है, तो वो इनएफिशिएंट होंगे। और तो दैट मीन्स कि हमें फिर कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज डिवाइसेस को यूज़ करना पड़ेगा, जैसे हेडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम्स हैं, या उसके अलावा गूगल क्लाउड स्टोरेज है, या AWS S3 है। तो वो हमारे पास एसेंशियल होंगे क्योंकि हेट्रोजीनियस फॉर्मेट के अंदर है। दूसरा ये कि इस जो आपका पास इतना स्टोरेज का इशू है जिसमें आपके पास जो वॉल्यूम है बहुत बड़ा है, दैट मीन्स कि जब आपने उसको एक्सेस करना है तो उसके लिए आपके पास जो आपकी जो क्यूरी होगी वो अनस्ट्रक्चर्ड जो रिपोजिटरीज के अंदर जाएगी, तो दैट मीन्स कि वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होगी, क्योंकि उसमें आपके कोई इंडेक्सिंग वगैरह नहीं है, कोई स्पेशलाइज्ड टूल्स नहीं है। तो स्पेशलाइज्ड टूल्स को अगर यूज़ करेंगे तो फिर उसको हैंडल किया जा सकता है। मगर चूंकि आपने जो क्यूरी करना है लार्ज अनस्ट्रक्चर्ड रिपोजिटरीज को, तो वो स्लो होगा। ठीक है। देन उसकी वर्जनिंग और डुप्लीकेशन की बात करें तो आपने उसके डिफरेंट वर्जन्स ऑफ डाटा को भी आपने स्टोर करना होगा, तो उसको और प्लस उसके डुप्लीकेट्स वगैरह बनाने होंगे, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे वर्जनिंग और डुप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में आ सकती हैं फर्स्ट चैलेंज के अंदर। देन अगर सेकंड चैलेंज की बात करें जो कि डाटा क्लीनिंग और एनोटेशन के से रिलेटेड है, तो इसमें यह है कि आपके पास चूँकि डाटा बिल्कुल मैसी फॉर्मेट के अंदर है, उसके अंदर एरर्स वगैरह हो सकते हैं, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं अगर टेक्सचुअल डाटा है। तो उसके अलावा आपके पास अगर इमेजेस हैं तो उसके अंदर नॉइजेस हो सकती हैं, नॉइजी डाटा हो सकता है। अगर ऑडियो है तो उसके अंदर बैकग्राउंड डिस्टर्बेंसेस वगैरह हो सकती हैं। और मेटा डाटा जो आपके पास होगा वो भी मिसिंग या इनकंसिस्टेंट हो सकता है। ठीक है। तो इसके लिए आपके पास जो क्लीनिंग और लेबलिंग का जो टास्क होगा वो आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। अगर किसी भी आप अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की पाइपलाइन को देखें तो दैट मीन्स कि आपके पास इसमें नॉइज़ होगी, इसमें रिडंडेंसी होगी, तो इसमें आपको क्योंकि आपके पास डाटा कोई लिमिटेड वॉल्यूम के अंदर नहीं होगा, तो इसमें आपने जो डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है, नॉइज़ को रिमूव करना है, या रेलिवेंट कंटेंट को जो फिल्टर आउट करना है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क होगा विदाउट द डोमेन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। और चूंकि आपके पास मेटा डाटा भी इनकम्प्लीट है, तो दैट मीन्स कि आपके पास काफ़ी ऐसी फाइल्स होंगी जिसमें टाइम स्टैम्प, सोर्सेज और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन वगैरह काफ़ी मिसिंग होंगी। देन उसके अलावा अगर आप ह्यूमन एनोटेशन की तरफ जाते हैं, इसको ह्यूमंस के ज़रिए एनोटेट करवाएं, तो जो लेबलिंग टैक्स होगा उसमें आपको, या ऑडियो की जो ट्रांसक्रिप्शन होगी उसके लिए आपको एक्सपर्ट इनपुट वगैरह चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी। ठीक है। तो दैट इज़ द सेकंड चैलेंज। देन थर्ड चैलेंज इज अबाउट द फीचर एक्सट्रैक्शन। फीचर एक्सट्रैक्शन में चूंकि ये है कि आपके पास ये जो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है बिल्कुल एक रॉ फॉर्मेट के अंदर है। ठीक है। उसको आपको ट्रांसफॉर्म करना होगा इनटू यूजिंग सम न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन,
so that the ML model can understand the data. दैट मीन्स कि आपके पास इस प्रोसेस के लिए आपके पास कुछ फीचर एक्सट्रैक्शन या एम्बेडेंस वगैरह हों जो कि डोमेन स्पेसिफिक होनी चाहिए. तो इस केस में जो चैलेंजेस आ सकते हैं फीचर एक्सट्रैक्शन के, दैट इज रिलेटेड टू समवट हाई डायमेंशनलिटी ऑफ द डाटा. ठीक है, क्योंकि आपके पास जो टेक्स्ट और इमेजेस हैं उससे आपके लार्ज फीचर स्पेसेस प्रोड्यूस हो रही हैं. दैट मीन्स कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटेशन वगैरह इंक्रीज हो रही है और आपका जो रिस्क है वो ओवरफिटिंग का वो इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो इसमें हाई डायमेंशनलिटी ऑफ द डाटा है. दूसरा ये कि आपके पास सिमेंटिक मीनिंग की अगर बात करें तो वो आपके पास मिसकॉन्टेक्चुअल रिलेशनशिप्स हो सकते हैं सिंपल टेक्निक्स के ज़रिए. आप लॉस ऑफ सिमेंटिक मीनिंग, देन उसके अलावा डोमेन डिपेंडेंसी की बात करें तो जो फीचर्स हैं दैट वर्क फॉर टेक्स्ट डू नॉट अप्लाई टू ऑडियो और इमेजेस. ठीक, और इस सारे की अगर कंप्यूटेशनल कॉस्ट की बात करें तो आपके पास दैट इज़ अगर इन सब के लिए आपने फीचर एक्सट्रैक्शन की कोई मेथड यूज़ करना है तो दैट मीन्स कि आपके पास कुछ जीपीयू इंटेंसिव होगा ये कंप्यूटेशनली. अच्छा, लास्ट चैलेंज की बात करें दैट इज़ द इंटीग्रेशन इनटू द एमएल पाइपलाइंस. तो आपके पास जो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के जो वर्क फ्लोज हैं वो मल्टी स्टेज और कॉम्प्लेक्स हैं. दैट मीन्स कि आपके पास उसमें इन्वॉल्विंग होगी डाटा कलेक्शन की, प्री प्रोसेसिंग की मेथड्स होने चाहिए, फीचर एक्सट्रैक्शन, ट्रेनिंग, इवैल्यूएशन एंड देन डिप्लॉयमेंट. तो इन सबको अगर आपने इन सारे स्टेजेस को अगर आपने इंटीग्रेट करना है into the ML pipeline so that it can be reproducible and scale up. So that means that it's somewhat a Herculean task so that you can provide consistent data formats. In this case, you have to manage the dependencies, versioning and scheduling large scale workflows. So that means आपके पास जो मॉडल की रिप्रोड्यूसिबिलिटी है उसमें आपको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी. और इसके लिए आपके पास कुछ टूल्स होने चाहिए जो कि हेल्प करें इसको इंटीग्रेट करने के लिए पाइपलाइंस के लिए. ये वो 4 चैलेंजेस हैं जो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के अंदर फेस करने पड़ते हैं. इनके सॉल्यूशंस क्या हैं? सो लेट्स डिस्कस देम. फर्स्ट चैलेंज वाज रिलेटेड टू स्टोरेज एंड स्केलेबिलिटी. As I mentioned earlier, we can use distributed storage such as Hadoop distributed file system, which was explained in the previous lecture. We can use Amazon S3, or we can use Google Cloud Storage to store the data in a distributed fashion so that it cannot be lost and can be reproduced. And in order to manage the data for the context of databases, we can use scalable databases such as MongoDB. For the data cleaning purpose, to overcome that challenge, we can use the text pre-processing methods such as the natural language toolkit NLTK to overcome the challenge of textual data cleaning. For image pre-processing, we can use OpenCV TensorFlow image data generator. For annotation, we can use Amazon SageMaker Ground Truth. To overcome the challenge of feature extraction, which was somewhat related to the high dimensionality and the embeddings, we can use BERT-based embeddings. We can use CNN-based feature maps like ResNet, VGG, or EfficientNet. And in order to overcome the challenge of integrating into the ML pipelines, we can use the containerization concept of Docker or Kubernetes so that data can be so that the model can be can be reproducible. And in order to overcome the challenge of versioning, so in order to overcome the challenge of orchestration, we can use Airflow, Kubeflow, or MLflow so that it can be scale up and it can be orchestrated into the ML pipelines. इस सारे के लिए अगर let's suppose we have a textual data, in this case you can see कि हमारे पास जो डाटा है that is ये हमारे पास डाटा है. This text is helpful, it helps understand the data science.
So in this case, this is the doc, or you can say the corpus. So in order to process this unstructured data, I have provided a very smaller example, which in this case I have provided two sentences. We can say in this case it's a unstructured data because it does not have a predefined format, or it does not have a predefined relations. So in order to process this textual data, we need processing framework. In this case, I am using the NLTK, that is the Natural Language Processing Toolkit. So in order to make the data into the form of embeddings, I am using two libraries here. First one is the TF-IDF Vectorize. It is from the scikit-learn, and it converts a collection of text documents into term frequency inverse document frequency. Term frequency inverse document frequency, that is TF-ID. It is a representation in which a numerical numerical representation used for machine learning models. I am using this TF-ID vectorizer. फिर उसके बाद ये मेरे पास एक, आप देख सकते हैं, मेरे पास एक कॉर्पस है. This is the corpus, which is in this case is the two sentence consisting of two short documents, or you can say two sentences. Is in this case the TF-ID will treat this input corpus as the two documents and will analyze the frequency of the words in each document. So what TF-ID will do here, it will vectorize, it will tokenize the text into the word. It will remove the punctuations, and it will convert all the text into the lowercase. This one, TF-ID vectorizer, and the computed TF-ID values for each word in this document will be passed on to the vectorizer variable. After that, this is the fit function. This is the fit function. What this fit function do, it learns about the vocabulary, or you can say the unique words from all the documents, from, in this case, from all the two sentences. And this transform function, what it will do, it will convert each sentence, or you can say this each document, into a numerical vector using that vocabulary of the fit. And after that, the result is a, you can say, a sparse matrix in which each row represents a document and each column contains a word. So after that, I am printing the features using this to name out what are the features. After that, you can say I am viewing the number of features, names of the feature or the unique words, and after that I am converting this into the I am converting the sparse matrix, which is produced using the fit and the transform functions. I am converting this sparse matrix into a numpy array for readability, so that each row corresponds to a document and each column corresponds to one of the feature words. So in this case, you can say I have converted the unstructured data into somewhat structural format. What can be the applications of unstructured data? This unstructured data, if it is in the form of a textual, it can be used for sentiment analysis. It can be used for spam detection applications. If the image based data, it
can be used for object detection using ULO or fast RCNN, or it can be used for the facial applications, facial recognition applications. If it is in audio data, it can be used for emotion recognition. If it is a multimodal data that contains the applications of textual data, image, and audio, so it can be used for all three type of applications. So it can be used, this structured unstructured data can be used in any type of application, you can say. So what could be the pipeline or the overall you can say the workflow for the unstructured data? So initially हमारे पास क्या होता है कि जो data sources होते हैं उनसे हमारे पास डाटा आएगा, लेट्स सपोज इमेज है, टेक्स्ट है, ऑडियो है या वीडियोस हैं, ये लॉग्स की फॉर्म के अंदर है. Then we will have to be ingested into a stream using some batch based processing or streaming based processing. And to store that data, we can use the scalable storage services or the distributed storage services like HDFS or object-based storage like S3, or we can use MongoDB as well for cataloging metadata as well. To pre-process, I have provided you some example of the pre-processing earlier as well, in which we are cleaning the data and transcoding the data. After that, we can use the feature extraction, which I have provided using the TF-IDF. We can use the CNN feature maps as well. And after that, we can model that data using some transfer learning, deep learning, and or machine learning based model. And we can evaluate that unstructured data model or multiple matrix values, matrices. We can evaluate that model or multiple matrices, and then we can visualize that, and after that we can deploy that model using APIs, and using APIs like Edge API, or we can use Flask API as well. For orchestration, we can use Kubeflow, MLflow, or we can use Airflow for the sequencing which task is to be performed. For example, we can perform the feature extraction first, then modeling, then evaluation, so that it can be automated in a way. And after that, if the data evaluation is found, then we can retrain that on data. So it's a somewhat a feedback loop can be here. So what is your task here for today? The task for you is to first one, पहला टास्क तो ये है कि आप वो जो है मैंने आपको कहा था कि आप HDFS को अपने पास Hadoop डिस्ट्रीब्यूट फाइल सिस्टम को अपने पास इंस्टॉल करें. Hadoop की इंस्टॉलेशन का आपको कहा था, तो आई होप आप लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया होगा. Before going to Hadoop, the task for today is you are provided with the unstructured data, which is a news based data. In this case, you can see the data set at this link. It is a collection of news articles. Your task is to develop a pipeline for text feature extraction and analysis, and after that you need to implement that pipeline to analyze which words are the most significant in differentiating the multiple documents. So in our next class, I need you to perform this task before coming into the class. So that's all for today. और अगर आपकी कोई क्यूरीज वगैरह हों टुडे आज के लेक्चर के हवाले से, तो फिर आप नेक्स्ट क्लास में मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, जो कि आई होप वो फिजिकल होगी. थैंक यू सो मच.